Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 10th, 11th, and 12th classes, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today I am going to teach you something about the conditional clauses, and this video will form the first part of the series. It is 15th of September 2020. So, my dears, let's move to the main topic. Conditional clauses, part number 1. It is unit 16 on the prescribed grammar book. My dear students, conditional clauses are a type of adverbial clause. You must be knowing what an adverb clause is, as I have delivered at least more than 5 video lectures on clauses, on principal clause, on subordinate clause, and on the 3 main types of clauses. 2 main types of clauses, coordinating clause and subordinating clause, and then the sub clauses also under subordinate clause. I have explained at large all these things related to clauses. So this conditional clause is also an adverbial clause, and adverbial clause is always a subordinate clause. It is dependent upon the principal clause. The event situation described in the main clause depends on the condition in the subordinate clause. जो मेन क्लास में जो सिचुएशन होती है या कोई मामला होता है वो डिपेंड करता है सबऑर्डिनेट क्लास के शर्त पर, यानी वो मशरूत होता है. सो कंडीशनल का मतलब ही है मशरूत क्लास, जिसमें कोई शर्त हो, किसी चीज़ का होना हो और उसके नतीजे में कोई दूसरी बात हो जाए. यह एक मिसाल है. द एग्जाम्पल इज इफ इट रेन्स we will get wet. We will get wet. हम गीले हो जाएंगे. लेकिन इसकी शर्त क्या है, रीज़न क्या है? If it rains, अगर बारिश हो जाए, अगर बारिश बरसे. या इसी the same sentence can be written like this: we will get wet if it rains. यानी we will get wet जो है ये main clause है, और इफ इट रेन्स जो है कंडीशन है, यानी शर्त है. तो शर्ती क्लाज हम चाहे पहले इस्तेमाल करें या सेकंड प्लेस पर इस्तेमाल करें तो मीनिंग इज सेम. देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग. सो ओनली द स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज if it rains, conditional clause comes first, we will get wet, main clause comes next. So we can use at the first place, we can get wet. We will get wet, main clause. If it rains, conditional clause. अगर बारिश हो जाए तो हम गीले हो जाएंगे. तो कंडीशनल का मतलब भी है कि किसी जो शर्त हो, अगर ये हो जाए तो फिर ऐसा हो जाए. The most common conjunction used in the conditional clauses is if. In fact, conditional clauses are also called if clauses. However, there are other conjunctions too that are used in conditional clauses. तो ये क्या बात कह रहा है यहाँ राइटर, कहता है कि सबसे ज़्यादा जो कंडीशनल क्लॉज में मेन जो कंजक्शन है वो है इफ़. दरअसल कंडीशनल क्लॉजेस को किसी वक्त हम कहते हैं इफ़ क्लॉजेस भी, क्योंकि इनमें इफ़ खास कंजक्शन होती है, तो इसी पर ये कंडीशन मुनहसर करती है. लेकिन if के बगैर there are some other conjunctions also which can be used in conditional clauses, which can make a conditional clause possible. For example, unless, if no, अगर तो ये का रखें ऐसा. Provided that, बशर्ते कि, शर्त यह है कि, ये only if, so long as or as long as, जब तक कि, on condition that इस शर्त पर कि suppose
मिसाल के लिए हो सकता है, अगर ये हो जाए, इन केस, इफ, इन केस मीन अगर, तो इनको इस्तेमाल भी किया है राइटर ने यहाँ। ही विल फेल अनलेस ही स्टडीज हार्डर, वो फेल हो जाएगा जब तक कि वो मेहनत ज़्यादा न करे। तो यहाँ जो है ही विल फेल, इट इज़ अ मेन क्लॉज। इसकी क्यों हो जाएगा फेल, यानी शर्त है कि अगर वो मेहनत न करे, यानी अगर वो मेहनत करे, इफ ही डज नॉट स्टडी हार्डर ही विल फेल। सपोज देयर आर नो टिकट्स अवेलेबल, व्हाट शैल वी डू। लेते हैं फिलहाल मिसाल के लिए, अगर हमें टिकट्स अवेलेबल ना हो तो हम क्या करेंगे। What shall we do if we do not have tickets available? तो ये भी एक किस्म की इफ क्लॉज है, लेकिन इफ के बजाय दूसरा कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दूसरी कंजंक्शन जिसका मीनिंग यही निकलता है शर्त। I'll come with you provided that you try, मैं आपके साथ आऊँगा इस शर्त पर कि आप ही गाड़ी चलाएं। तो यह जो है ये इफ क्लॉज तो नहीं है, लेकिन कंडीशनल क्लॉज ज़रूर है। इसमें शर्त है, मैं आऊँगा आपके साथ, इस शर्त, यानी शर्त यह है कि आप गाड़ी चलाएं। इफ़ यू ड्राइव देन आई विल कम विद यू, एंड इफ़ यू डोंट ड्राइव आई विल नॉट कम टू यू। तो इसी तरह दूसरा जो है, सपोज देयर आर नो टिकट्स अवेलेबल, व्हाट शैल वी डू। व्हाट शैल वी डू इफ देयर आर नो टिकट्स अवेलेबल। So it is not an if clause, but it is a conditional clause indeed. So there are four main types of conditional clauses. चार main types of conditional clauses होते हैं, ये हमें समझना है। प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन इसको कहते हैं ओ कंडीशनल, या इसको जीरो कंडीशनल भी कहते हैं। दे विल कंडीशन, दूसरा है दे विल कंडीशन, या इसको कहते हैं फ्यूचर कंडीशन भी, ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल, इसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। दे विल, इसमें दे विल या दे शैल होगा इस्तेमाल। इन द सेम वे द विल कंजक्शन, द वुड कंडीशन, ऑल्सो कॉल्ड सेकंड कंडीशनल, यानी विल के बाद जो वुड है इसको हम सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल कहेंगे। द वुड एंड हैव कंडीशन, द वुड हैव कंडीशन, इट इज कॉल्ड द थर्ड कंडीशनल, इसमें परफेक्ट इस्तेमाल होता है, थर्ड कंडीशनल इसको कहते हैं। नाउ ईच ऑफ these conditionals has a distinct structure of its own. As these are the four main types of conditional clauses, the present condition, the will condition, the would condition, the would have condition, they are respectively called O conditional, first conditional, second conditional, or third conditional. Now all these have different structures, they have their own structure. So structural difference is there between these, among these four main types of clauses, conditional clauses. Now let's have a look at the first one, that is present conditional or O conditional or simply zero conditional. इसमें स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, if plus present simple plus present simple, present simple plus present simple. You know that in a conditional clause there are two clauses. In a conditional sentence there are two clauses. So one is main clause and second is subordinate clause, and subordinate clause will be having this structure if it is a conditional clause, if present simple plus present. So in both the clauses in this present conditional sentence, in both the clauses we use simple present, simple present. Now example is if or when, one of them, we can use either of them. If you heat butter, it melts. This always happens. If you heat butter, so if you heat butter, heat present simple. In the next main clause जो है वो है it melts, इसमें भी simple present है. So it always happens when you heat butter, it melts. जब आप butter को
करोगे हीट तो वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल लेगा। इन द सेम वे दूसरी एग्जांपल है इफ और व्हेन a motorist sees a red light he stops, a general rule। जब मोटरिस्ट रेड लाइट देखता है तो उसको स्टॉप करना होने वो रुकता है। सो सीज स्टॉप्स, बोथ दीज verbs show present simple। In these types of clauses, if always, if almost means when or whenever। इन clauses, इस किस्म की clause में जो if होता है इसका हमेशा मायने होता है when या whenever, जब भी आप हीट करोगे बटर ये पिघलता है। अब दूसरा है द विल कंडीशन। द विल कंडीशन, और इस द विल कंडीशन जो है 2.2 इंशाल्लाह it will be covered in the next lecture which will form the second part of the same। Thank you very much।